Hello everyone and very good morning everyone. Welcome you all to ADA 24/7 Odia YouTube channel. समस्त पिला माने ADA Odia को welcome and this is Satya Sir Pedagogy. Again समस्त पिला माने very good morning everyone. Good morning all. हम माने डिस्कशन करछि पिला माने SSB TGT रो Pedagogy रो mock test. We are already around 14 mock test. I think we have discussed 14 is around 250 questions. Okay, समस्त पिला माने गुड मॉर्निंग नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग ऑल. तो आमे माने पिला माने आज डिस्कशन करबा आपनकर पेडागोजी रो मॉक टेस्ट नंबर 15. जे जन भी सेशन अच्छे समस्त सेशन को गोटे लाइक एंड शेयर कर दियंतु. देन विल स्टार्ट आवर सेशन. रेडी? यस. तो आज आप गोटे छोटिया थरप देते मो तरफ. द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग. सब करंतु. एमएडी स्टूडेंट एसएसबी पीजीटी एंड लेक्चरशिप एलिजिबल. हाँ, एमएडी प्ले एलिजिबल. दे आर एलिजिबल फॉर एजुकेशन. एसएसबी पीजीटी एजुकेशन एंड आल्सो जूनियर लेक्चर एजुकेशन बाय एलिजिबल. 200% एलिजिबल. क्वेश्चन पचारिया बंद करंतुनी. क्वेश्चनिंग कैन ऑलवेज मेंटेन द क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज. इट इज सब मो लाइफ मन रखी. ओके, तो आमे लास्ट होमवर्क जो गतकाल देथिल तार आंसर आम डिस्कसन करबा. आ सहित आम डिस्कसन करबा मॉक टेस्ट नंबर 15 आउ लास्ट प्रॉब्लम मन पे होमवर्क मध्ये अछि. लास्ट प्रॉब्लम मन पे होमवर्क मध्ये अछि. ठीक अछि? ठीक है. ओके, चलो एटा थिला आपण मन पई गत होमवर्क. जे असेसमेंट इज ए गुड स्ट्रेटजी टू लेबल एंड कैटेगराइज. सर लेबल और कैटेगराइज दीज आर द नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी. पिला मन के लेबलिंग करबा कैटेगराइज करबा एटा नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी. ठीक. शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द चिल्ड्रन. कंपिटिशन भी नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी. पिला मन भीतर टेंशन और स्ट्रेस बढ़ेबो नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी. यस. द आंसर इज ए वे टू इंप्रूव लर्निंग. असेसमेंट इज ए वे टू इंप्रूव लर्निंग. एसएसबी टीजीटी रो एग्जाम केबे हो? जब भी एग्जाम हो था बिफोर 25 डेज टू 30 डेज तुमको नोटिफाई हो. तो एटा से टारगेट रखी चलो पढ़ चल था. लास्ट 20-30 दिन तुम ताको रिवीजन पे रखी दी था. तुम चेष्टा कर थ्योरी तक जमी आ भर साथ दवा. थ्योरी तक सर एग्जाम डेट जब डिक्लेयर हो तब क्वेश्चन आंसर और रिवाइज करवा. ये टारगेट पढ़ था. ठीक अच्छे. एग्जाम जो इलेक्शन डेटा डिक्लेयर होनी से एसएसबी टीजीटी एग्जाम टिया डिले हो. इलेक्शन डेट जब डिक्लेयर होगा एसएसबी टीजीटी कन्फर्म हो एसएसबी कन्फर्म हो डेट रे स्कूल कॉलेज फांका रहिबो. टीचर स्टाफ एग्जाम करने तो स्कूल कॉलेज दरकार, स्टाफ दरकार. समस्त यदि इलेक्शन ड्यूटी पड़े स्कूल कॉलेज यदि इलेक्शन यूज हो परीक्षा हम कौटी कर किए से डिले प्रोसीजर टी अच्छे. देखिए कौन हो. बट तुम्हें से टारगेट जाओ जब भी एग्जाम हो बिफोर 25 डेज मैक्सिमम तुमको जना. ठीक अच्छे. तो से माइंडसेट चलो. गोटे कथा बड़ कथा तुम्हें चेष्टा कर मुझे कम्प्लीटली थ्योरी तक सारी दे थाए. जो 25 डेज 30 डेज तक मुझे रिविजन भाया नेबी. ओके, से माइंडसेट चलो. एग्जाम डेट कथा न चिंता करी चिंता कर एग्जाम डेट डिक्लेयर हो पूर्व जमी मो पाखे थ्योरी सर जाइए. ये माइंडसेट चलो बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम डेट आई हैव कंप्लीटेड माय थ्योरी. ये काम करूँ. एग्जाम डेट तक खाली आप जो 20-25 दिन तक रिविजन भाई रखु. ओके, ये माइंडसेट चलो. केवल पेडागोजी कथा कहूनी, बाकी सब सब्जेक्ट कथा कहूँ. I am not telling about the pedagogy. I am telling about the all subjects. CHS जहाँ कौन
जहाँ हो भल हो देखा जाओ कौन हो किसी इनफर्मेशन ना कहीं अजथार मुझे कहि आंसर इज डी डी तो बहुत सारा पिला आंसर देते समस्त रेस्पॉन्स तो बहुत सारा पिला आसी थैंक यू मामून दीपक कृष्णा संगीता गीतांजलि प्रियंका मधु शुभश्री मधुस्मिता देवाशीष रश्मिता आहरी बहुत सारा पिला ना अच्छी सब पिला कमेंट पाखापाखि 60-70 कमेंट आसाला समस्त नाम मेंशन कर पारनी जो मैंने भी सेशन रे लास्ट पर्यंत अच्छा आंसर दौरान समस्त पिला बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच रेडी पिला माने स्टार्ट करिया मॉक टेस्ट नंबर 15 समस्त रेडी अच्छा मोर देन 82 लर्नर्स आर देयर समस्त गोटे लाइक आउ शेयर गोटे कर दियो दबाई दियो बटन देन विल स्टार्ट आवर कार्यक्रम चलो ऑल ऑफ यू रेडी रेडी पिला माने रेडी फॉर मॉक टेस्ट नंबर 15 डन चलो क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन ओरिएंटेड साइकोलॉजिस्ट करो लिस्ट के प्रोवाइड करथिले भल होता हाँ मुझे देदेवी बट से देखिए मुझे देदेवी इतने टेलीग्राम रे देदेवी failure of a child to perform well in class test leads us to believe that failure of the child to perform well in the class test leads us to believe that assessment is objective and can be used to clearly identify failures. There is a need to reflect upon the syllabus, pedagogy and assessment process. Some children are deemed to fail irrespective of how hard the system tries. Children are born with certain capabilities and deficiency. पिला माने जदि किसी फेल हेले पिला माने जदि परफॉर्मेंस ठीक से न कले ताहले आमे कोन भाबिया दरकार सुन एक्चुअली एनसीए 2005 को जी चाइल्ड फेल द सिस्टम फेल पिला जदि फेल हो सिस्टम फेल हो पिला जदि फेल हो आपण चिंता करंतु जे यू शुड हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन द pedagogical strategy you have to reflect upon the assessment process you have to change your process you have to change your process always change the system to fit the child पिला फिट पिला चेंज होबनी तमे चेंज हो पिला अनुसार यस आंसर इज बी तमे पिला अनुसार चेंज होले पिला ऑटोमेटिकली चेंज हो सिस्टम शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड चाइल्ड विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम पिला एडजस्ट करबनी हमको पिला अनुसार एडजस्ट करे पड़े आंसर मु मेंशन करनी कह दो खाली क्वेश्चन नंबर 2 द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू व्हाट द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन refers to what method of teaching and content to be taught overall program of the school which students experience on day to day basis evaluation process text material to be used in the class the term curriculum in the field of education field रे curriculum कहले हमें कौन बुझा method of teaching and content to be taught एटा तो curriculum रो गोटे पार्ट curriculum टा गोटे comprehensive term curriculum टा गोटे बड़ term by curriculum an educational institution runs गोटे कनिंगहाम को गोटे डेफिनेशन अछि curriculum is a tool in the hand of an artist to mold his material in his studio artist के teacher curriculum is a tool in the hand of an artist to mold his material in his studio according to his ideal artist होची teacher material होची student the studio होची educational institutions curriculum is an overall program it's a comprehensive term it covers curricular as well as co-curricular process so it's the overall program of the school which students experience on day-to-day basis done answer B mention करने answer but answer B question number 3 with timer is on question number 3 to make assessment a useful and interesting process one should be careful about making comparison between the different students labeling students as intelligent or average learners using a variety of ways to collect information about the students learning across the
scholastic and co-scholastic boundaries, use technical language to give feedback. Assessment को यूजफुल और इंटरेस्टिंग बनाया पाई हमें कहाँ पर गुरुत्व दबा उचित कंपैरिजन नेगेटिव वर्ड लेबलिंग नेगेटिव वर्ड टेक्निकल लैंग्वेज फीडबैक पे यूज करिया टेक्निकल लैंग्वेज पिला बुझी परिबेनी पिला को फीडबैक दियो पिला को भाषा रे सिंपल लैंग्वेज जेंति पिला बुझी परिबे टेक्निकल लैंग्वेज घर रख ए बी डी नेगेटिव तो सी अब आंसर always use simple language to give feedback not technical language okay technical language को otherwise कौन कहते jargon कौन कहे jargon use करो नहीं use a variety of ways to collect information about the students learning across the scholastic and co-scholastic area এটা করা যাবে okay this is the right answer question number 4 which one of the following negative word अच्छी pdf दे देना which one of the following statement is not correctly related to CC it is an integral part of teaching learning process it focuses on achievement in different learning areas it is useful to label children as slow poor or intelligent or it has been mandated by RTE Act of India. CC बाबद रे कोटा करेक्ट नुहे CC को CC टा गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सहित कनेक्टेड पाठपढ़ा चली तो CC चली ठीक अच्छे ये पिलार डिफरेंट एरिया रे अचीवमेंट ऊपर गुरुत्व दिए हाँ CC रे वर्ड पर कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ होलिस्टिक गोटे पिलार ओवरऑल डेवलपमेंट ऊपर गुरुत्व दिए ये पिला को आम जो लेबलिंग करूँ लो पुअर इंटेलिजेंट ये लेबलिंग करवाटा नेगेटिव वर्ड यू कैन नॉट लेबल द चिल्ड्रेन लेबल कर तुम भल छुआ ये बस एवरेज छुआ से बस गधिया छुआ तले गड़ एम लेबलिंग कर तुम नेगेटिव वर्ड इट हैज बीन मैंडेटेड बाय आरटीई एक्ट हाँ आरटीई द्वारा सीसी लागू होता यस बुझीगला तो आंसर नॉट कही नॉट करेक्ट है आंसर सी हम क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चन रिपीट है छाड़ leave it question number 6 the most appropriate logical predicate for the continuous and comprehensive evaluation should be continuous और comprehensive evaluation बाबद रे कोटा सब गोटे मोस्ट appropriate logical predicate हो assessing more than one aspect of learning, maximizing assessment opportunities, promoting the holistic nature of human personality, increasing on burden of the teacher. कोटा लॉजिकल प्रेडिकेट कोटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीसी इंक्रीजिंग टीचर पर बर्डन एटा तो कहि परिबानी हमें प्रैक्टिकली बर्डन थ्योरेटिकल नुह थ्योरी अनुसार जीव मैक्सिमाइज द असेसमेंट अपॉर्चुनिटी हुए assessing more than one aspect of learning भल ऑप्शन लिखा है promoting the holistic nature of the human personality पिलार holistic development ऊपर सीसी गुरुत्व दे एटा बेटर ऑप्शन या सी भीतर सी टा बेटर ऑप्शन ओके मोर देन वन एस्पेक्ट अपेक्षा होलिस्टिक टा बड़ वर्ड कथा सेम बट खाली लर्निंग नुहे डिफरेंट अप्रोच मध्ये सीसी लाभ काम दिए हाँ क्वेश्चन नंबर 7 diagnosis of the gaps in the learning of a student should be followed by systematic revision of all lessons, reporting the findings to learners and parents, appropriate remedial measures, intensive drill and practice. Diagnosis of the gaps in the learning of students should be followed by more than one aspect of learning रे CC रे लर्निंग भी जाऊँगी करिकुलर एक्टिविटीज भी जाऊँगी को करिकुलर एक्टिविटी भी जाऊँगी सब जगह जाऊँगी ना होलिस्टिक पर्सनालिटी जाऊँगी ना सर डायग्नोसिस जदि आप डायग्नोसिस कले पिलार प्रॉब्लम इफ यू नो द प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम जदि प्रॉब्लम जाने प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी दबो ना
provide appropriate remedial measures. So C is the right answer. C is the right answer. Yes. Question number 8. The main purpose of assessment should be. More than 110 learners are there. जे जन अच्छा पिला माने 110 जन खंडा अच्छा. समस्त गोटे लाइक कर दे पिला सेशन को. समस्त गोटे लाइक कर दियंतु. The main purpose of assessment should be. Assessment रो main purpose कौन हवा दरकार? To decide if a student should be promoted to the next class. Assessment रो मुख्य purpose खाली होची पिला मानन को class promotion करिवा. नहीं. To diagnose and remedy gaps in learning. पाठ पढ़ारे पिलार प्रॉब्लम जहाँ बाहर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करवा प्रॉब्लम को सॉल्व करवा. डायग्नोस कले टू नो द प्रॉब्लम, रिमेडी कले टू सॉल्व द प्रॉब्लम. डायग्नोस कले टू नो द प्रॉब्लम, रिमेडी कले सॉल्व द प्रॉब्लम. भलो कथा, खराब ऑप्शन नुहे. To point out the errors of the learner. लर्नर खाली एरर को पॉइंट आउट करवा. एरर जब पॉइंट आउट कले एरर को सॉल्व तो करवा ना. यू आर खाली पॉइंट आउट करवा इंपोर्टेंट नुहे. पॉइंट आउट करी ताको सॉल्व करिया इंपोर्टेंट. To measure the achievement of the learner. खराब ऑप्शन नुहे, बट ऑप्शन बी बेटर ऑप्शन. Yes, because assessment is an integral part of teaching learning process. Assessment चलची माने learning चलीची. Okay. चलो. Question number 9. Which of the following assessment statement is true? Which one of the following statement is true? I will co statement are true. The formative assessment can sometimes be summative assessment and vice versa. The summative assessment implies that assessment is a continuous and integral part of the learning process. The major objective of formative assessment is to grade and the achievement of students. Or the formative assessment summarizes the development of learning during the time interval. Formative assessment बेले बेले summative बेले बेले formative. ठीक कही बने. Summative टा learning process रो integral part ना सर. Formative टा learning रो integral part. Summative टा last को हुए. Major objective formative रो main objective होची पिला मानू को grade दबा. Summative रो main objective होची grade दबा, rank दबा, mark दबा. Summative रो main objective होची to provide grade, mark and rank. कटी लाने तीन लगा option. रोई लाने D. Formative assessment the learning during teaching learning process हुए. Yes. Learner development ऊपर गुरुत्व दिए. ठीक है, भला option. Question number 10. Assessment of learners' achievement help the teachers to dash. Evaluate the effectiveness of pedagogy. Make ability grouping of the learners in the classroom. Prepare activity log for teaching. Maintain the performance record of the learners. First number कौन? Assessment of learners. मैंने केमती पाउछंदी एते जल्दी आंसर 4 सेकंड रे दे दोस. तमें 4 सेकंड दोस ने 8 सेकंड रे तमें आंसर दियो. Best word. Assessment of learners. Achievement help the teachers to dash. लर्नर रो असेसमेंट कले लर्नर को असेस कले यह टीचर को कोथरे सहायता करिवो. इट विल इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी. मु जदि लर्नर को असेस करिवि, लर्नर जदि दोष दुर्बलता जानिवि, मु से अनुसार मो पाठ पढ़ाटा को बागेबि. भलो कथा. मेक एबिलिटी ग्रुपिंग नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी. तमे जनरल क्लासरूम रे कदापि एबिलिटी ग्रुपिंग करिवो. एबिलिटी ग्रुपिंग माने दक्षता अनुसार ग्रुपिंग करिवो. एबिलिटी ग्रुपिंग तमे रिमेडियल क्लास रे करि परिवो. जनरल क्लासरूम में तुम एबिलिटी ग्रुपिंग कर परिबनी. दक्षता अनुसार ग्रुपिंग करबा जनरल क्लासरूम रे नेगेटिव वर्ड पेडागोजी. एबिलिटी ग्रुपिंग माने भलो छुआ अलग बसिबो, एवरेज छुआ अलग बसिबो, स्लो लर्नर को अलग बसिबो. एमती एबिलिटी ग्रुपिंग जनरल क्लासरूम में कर परिबा नाही. प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग खराब ऑप्शन नुहे. मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड खराब ऑप्शन नुहे, बट ऑप्शन ए द बेटर. ऑप्शन ए बेटर. ठीक अछि. ओके.
more than 130 learners are there. समते सेशन गोटे लाइक कर दो पिला माने एवरीबॉडी. So answer is option A. Question number 11. Answer देंदु. Assessment for learning takes into account the following except learning style of the students, strength of the students, need of the students, mistake of the students. Assessment for learning takes into account the following except. Assessment for learning कहला हमें कोई फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव रे हमें कोटा को गुरुत्व दौ नाहु एक्सेप्ट कहि लर्निंग स्टाइल को गुरुत्व दौ पिलर स्ट्रेंथ नीड को गुरुत्व दौ मिस्टेक शुड नॉट बी टेक गिवन इंपोर्टेंस मिस्टेक को गुरुत्व दवा उचित नहीं मिस्टेक को रेक्टिफाई करा जाय पारे बट वी शुड नॉट फोकस ऑन द मिस्टेक दीटा बेटर ऑप्शन यस चल क्वेश्चन नंबर 12 एटा गोटे यूनिवर्सल क्वेश्चन प्राय तो सब जगह कंफ्यूजिंग आंसर आर बहुत तुम पिला Christiana took her class for a field trip. After coming back, she discussed the trip with her class. It may be connected as assessment for learning of assessment, learning for assessment, assessment of learning, assessment for learning. Christiana ता classroom class पिला को नहीं की गला field trip रे असला परे पिला मानक सहित डिस्कशन करिवा डिस्कशन क्विज इंटरेक्शन ये सब फॉर्मेटिव पार्ट ये सब कार पार्ट फॉर्मेटिव पार्ट जेतोटा फॉर्मेटिव पार्ट दिस इज असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रोसेस पिला को भावंदी आसिला परे जेहेतु कर जेटा समेटिव काई हो समेटिव काई न हो समेटिव होन डिस्कशन करा होची ताकू पिला फीडबैक देबे जा भूल कहबो ठीक कहबो पिला मानको से रेक्टिफाई करिवो तो इट इज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग बा फॉर्मेटिव डन. So assessment for learning dash fosters motivation is done for the purpose of a segregation and ranking, emphasizes the overall importance of grades, is an extensive a per se assessment activities. Assessment for learning motivation को promote करे is केवल assessment for learning कहले formative फॉर्मेटिव रे हम सेग्रीगेशन और रैंकिंग करू की सेग्रीगेशन तो नेगेटिव वर्ड पेडागोजी पिला को सेपरेट करबा अलग करबा नेगेटिव वर्ड पेडागोजी एम्फसाइज द ओवरऑल इंपोर्टेंस एक्सक्लूसिव नो असेसमेंट फॉर लर्निंग माने फॉर्मेटिव जोटा टीचिंग लर्निंग से तो कनेक्टेड या लर्नर को मोटिवेट करे यस फॉर्मेटिव लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट मोटिवेट द लर्नर्स ओके. Question number 14. A teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts the next lesson to meet the students' needs. He or she is doing assessment of learning, as learning, for learning, at learning. A teacher collects and reads the work of the class. Teacher collect करछि और पढुछि पिला मानकर जते वर्क ता कलेक्शन करूछि कलेक्शन कला देखिला करेक्शन कला और से अनुसार निजर टीचिंग को बागेला तार जो थे बोथ टीचिंग एंड लर्निंग दीटा जाक इम्प्रूवमेंट पर भी गुरुत्व दो जो असेसमेंट प्रोसेस रे जो आम टीचिंग एंड लर्निंग बोथ इम्प्रूवमेंट पर गुरुत्व दो ताको आम सर फॉर्मेटिव बोली कहू एंड फॉर्मेटिव इज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग सर आंसर सी टा बेटर ऑप्शन असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ए बेटर ऑप्शन. डन. Question number 15. All of the following promote assessment as learning except. All of the following promote assessment as learning except. सब जगह assessment as learning को promote करछि कोटा नुहे. Testing students as frequently as possible. Telling students to take internal feedback. Generating a safe environment for students to take chances. Tell students to reflect on the topic taught. कोटा
असेसमेंट आज लर्निंग रो पार्ट नुहे और असेसमेंट आज लर्निंग कहले आम कहीपर सेल्फ असेसमेंट बा पियर असेसमेंट पिला को आम जो टेस्ट करुचे परीक्षा सर टेस्टा हूँ समेटिव पार्ट एंड समेटिवटा हूँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग पार्ट एक्सेप्ट कही आंसर यहीटा ही हम टेलिंग द स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक समस्ते परस्पर फीडबैक नवा सेल्फ असेसमेंट पियर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट पियर असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट आज लर्निंग इटा ठीक अच्छे एक्सेप्ट पचार जेनेटिंग ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस आम गोटे अनुकूल वातावरण तैयारी करिबा जोटी पिला माने निजे निजे पढ़िबे निजे निजे चांस नेबे एटा हेई पारे कि सेटा हेई पारे कि सेटा हेई पारे कि बुझिला कि तो एटा when the students are taking their chances when their students are taking the chances of their own learning that is assessment as learning part tell the students to reflect on the topic taught जो टॉपिक पढ़ाई ता बाबद पिला मानू कहो तुम मैंने निजे चिंता कर पिला माने जदि निजे चिंता करछन सेटा असेसमेंट आज लर्निंग पार्ट एटा भी सेल्फ असेसमेंट बी सी डी इज पार्ट ऑफ असेसमेंट आज लर्निंग ए इज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग आंसर ए एक्सेप्ट कहला डन क्वेश्चन नंबर 16 एटा भी सब पिला होते व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी akin to assessment and learning assessment वो प्रोवाइड कर दे पीडीएफ फॉर लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग ऑफ लर्निंग व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग मु रोषे करुची रोषे करने सहित निजे फूड टेस्ट करुची जदि किसी लुण पड़े ना मन कर खीरी कर खीरी जदि जीरा गुंड पड़ने आउटे जीरा गुंड पकेबी लुण पकेबी जो थे मु निज लर्निंग को निजे बागई पारि जो थे आम लर्निंग प्रोसेस उपर गुरुत्व दौचे जो थे आम लर्निंग प्रोसेस उपर गुरुत्व दौचे एपर्तन खाद्य दिखाई तुमको खाद्य तैयारी चलती इट्स ऑन ए प्रोसेस इट्स ऑन ए प्रोसेस इट्स ऑन ए प्रोसेस निजे कर निजे इम्पोर्टाट नुहे ये प्रोसेस चलছে तुम आपको असेसमेंट आज लर्निंग कहबन जब ये फॉर्मेटिव पार्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग पार्ट assessment for learning part yes see answer question number 17 school based assessment is primarily based on the principle that ide jira gunda ha padu school-based assessment is primarily based on the principle that teachers know their learners' capability better than the external examiners. Students should at all cost get high grades. Schools are more efficient than external bodies of examinations. Assessment should be very economical. सर स्कूल बेस्ड असेसमेंट जोटा आम कहे टीचर मेड टेस्ट बा जोटा आम कहे नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट एटा को प्रिंसिपल बेस्ड टीचर नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन द एक्सटर्नल एग्जामिनर भल कथा टीचर ता छुआ जमी न चिन्ह बोर्ड कौन छुआ चिन्ह है ना students should at all cost get high grades एटा नहीं नकार नहीं ए आंसर यस टीचर पिलर इंडिविजुअल डिफरेंस को बेटर जानछि हां केतल कहि देथि भूल कहि देथि लक्ष्मी करेक्शन कर दवा टीचर who work under school based assessment are overburdened as they need to take frequent tests in addition on Monday test. Need to assign project work each subject to individual students, observe students minutely on daily basis to assess their values and attitudes, feel a sense of ownership of the system.
टीचर मेड टीचर जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट करुच्ची टीचर को लगे आई एम अपन ही भगवान है ना पिला को ऑब्जर्व करियो माइन्यूटली डेली बेसिस रे सेमानकर वैल्यू एटीट्यूड को असेस करियो भल कथा एटा स्कूल बेस्ड असेसमेंट रे टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ऑन द डेली बेसिस क्वेश्चन नंबर 19 से स्कूल बेस्ड असेसमेंट focus on exam techniques rather than outcomes, offer less control to students over what will be assessed, improve learning by providing a constructive feedback, now encourage teaching to the test as they involve frequently testing. School based assessment जो टीचर मेड असेसमेंट कह जाए टीचर मेड टेस्ट कह जाए नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कह जाए जेहेतु टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सहित कनेक्टेड हियर वी इम्प्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आम ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे लर्निंग प्रोसेस रो इम्प्रूवमेंट करने चेष्टा करूँ यस आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ anecdotal record except what is it is an accurate description of events it describes personal development or social interaction of a child it's a factual report with enough detail it is subjective evidence of behavior therefore does not provide feedback for scholastic area कही which of the following are the features of anecdotal record except कोटा anecdotal record रो गोटे फीचर नुहे anecdote रो अर्थ होउछ पिला माने small important life events life events important घटना बड़ी anecdotal record रे description of event करा जाए it describes personal development and social interaction पिलार पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करे अरे पर्सनल डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन को जदि गुरुत्व दौची ताले स्कॉलास्टिक एरिया प्रोवाइड बाबद रे पिक्चर काइन दबो स्कॉलास्टिक कोकोलास्टिक दीटा जाक एरिया को गुरुत्व दी पारे ठीक अछि एनेक्डोटल रेकॉर्ड होची गोटे रेकॉर्ड जो थरे हमें पिलार बिहेवियर पिलार ऑब्जर्वेशन पिला कोन कोन करूची ताको हम रेकॉर्ड करू मेंटेन करू एटा फैक्चुअल रिपोर्ट हां हे पारे D cannot be a part of anecdotal record. Answer D. Yes. Question number 21. While selecting material for the portfolio of students should be there. While selecting material for the portfolio of students should be there. While selecting material for the student's portfolio of dash student of dash should be there. Exclusion of the students, inclusion on the other teachers, inclusion of students. ऑफ डैश लिखा है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट मानक आम इंक्लूड करा दरकार पोर्टफोलियो सिलेक्शन बेले टीचर शुड इंक्लूड द स्टूडेंट्स आल्सो ओके प्लान आंसर ताले सी हो क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर आस्क्ड टू assemble various artifacts of their work in a notebook to demonstrate what they can do for the society. What kind of activity is this? पिला मानू को कहला ए माने सोसाइटी पे कोन करि परिबे नोटबुक रे मेंशन करि लिखंतु गोटे नोटबुक रे लिखंतु what they can contribute for their society. एटा ऐसे टाइप असेसमेंट ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ना पोर्टफोलियो असेसमेंट portfolio is a portfolio assessment. So D. Question number 23. One of the critique of standardized test has been that standardized tests are criticizing kon their language is difficult to understand. The test cannot be administered on a large population. Standardized test माने बोर्ड एग्जाम लार्ज पॉपुलेशन बहुत संख्या रे 6 मानक ऊपर टेस्ट करा जाई पारे पारे ने कोन पई
क्रिटिक्स माने कोटा तार गोटे क्रिटिसिज्म बा डिसएडवांटेज कहि दे डू नॉट गिव क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी दिए कौन पे क्लियर पिक्चर दिव्य दब पिलर कौन अच्छी दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयर फॉर बायस्ड मैंने मेन स्ट्रीम कल्चर को फॉलो करते से बायस्ड बायस तो कही परिबनी लैंग्वेज डिफिकल्ट तो कही होनी दे डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी पिलर एबिलिटी रो क्लियर पिक्चर स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी पार्शियल दे पारे कि न दे पारे टीचर मेड टेस्ट रे गोटे पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट करा जाय परिबो टीचर मेड टेस्ट रे गोटे स्टूडेंट रो होलिस्टिक डेवलपमेंट करा जाय परिबो स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे हम ओनली बेसिकली स्कॉलास्टिक एरिया को फोकस करू होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस हुए नाही आंसर सी हो बेटर सी कैन मेक ए डिसीजन फॉर डी सहित सी संपर्क नहीं स्टैंडर्डाइज टेस्ट जे एकटा केवल मेन स्ट्रीम छुआ को देखि करा जाय सेति में एरा बायस ना कहबोनी स्टैंडर्डाइज बायस कहले भूल हो स्टैंडर्ड टेस्ट ऑलवेज बायस कहले भूल संगे संगे आंसर चेंज मो सुनला पर पिला आंसर चेंज कर दउछन चलो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहि 24 The use of teacher-made test may be preferred over standardized test for assessing the performance of disadvantaged students as dash. Teacher-made test को standardized test ठारू अधिक गुरुत्व दिया जीवो कहीं standardized tests are given to only those students who come from higher strata of the society. Standardized test केवल से मानक पई जो पिला माने हाई सोसाइटी रो आछन से मानक पई standardized test do not take into account the special need of disadvantaged children. स्टैंडर्डाइज टेस्ट डिसएडवांटेज पिला स्पेशल नीड पर गुरुत्व दिए नहीं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैव लार्ज एरर ऑफ मेजरमेंट एंड कहले भूल हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट फोकस्ड ऑन रोट मेमोरी एमती हम इधर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे आमे पिलार स्पेशल देख स्टैंडर्डाइज टेस्ट समस्त करा जाए standardized test does not focus on the individual difference standardized test individual difference देखे नहीं को पिला भलो को पिला को सोसाइटी आसी ता ऊपर standardized test कदापि गुरुत्व दिए नहीं ता ऊपर standardized test गुरुत्व दिए नहीं तो standardized test individual difference को इग्नोर कर टीचर में टेस्ट हम समझ को एड्रेस करू तो standardized test रे ए दिन सला ही न पारे डिसएडवांटेज ग्रुप सेक्शन जो पिला आछंदी अरे बोर्ड रो परीक्षा वाला क्वेश्चन ला समस्त पे समान से डिसएडवांटेज हो कि नॉर्मल छुआ हो कि डिजेबल्ड हो तापर स्टैंडर्डाइज टेस्ट जब भी गुरुत्व दिए नहीं ओके आंसर बी हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस assess the child's ability to dash multiple choice question recognize the correct answer recall the correct answer construct the correct answer explain the correct answer सर एमसीक्यू रे चारटा ऑप्शन थाए आमे ठीक आंसर टा काली कोन करू रिकॉग्नाइज करू यस वी रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर सेति पे एमसीक्यू आमे एमसीक्यू को आमे अदरवाइज कहू रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन ओके ओ भाई मारो मुझे ये केते कलर चेंज गिरगिट अच्छा जो संडे दिन इवनिंग 7 ରୁ 9 आमे माराथन गोटे करवा टीजीटी पेडागोजी सिलेबस वाइज 100 खंडे एमसीक्यू माराथन गोटे करवा कौन कौच करवा केते स्कोर तुम स्कोर केते मेसेज कर एटा होमवर्क स्क्रीनशॉट नहीं जाता आंसर दबो ट्रू फॉल्स भी रिकॉग्निशन टाइप ओके सेशन को समझते गोटे लाइक कर दे पे एवरीबॉडी महाशिवरात्रि रही OSSC बही जो मैंने ने Y594S कोड अप्लाई करेंगे बही की टेस्ट सीरीज जहाँ भी परचेज कर Y594S कोड अप्लाई करो बाकी अन्य बैच में Y594 कोड
कि तमें हो कि तुम सांगसाथी हो क्या गोटे कौन गोटे कोर्स के कौन परचेज कर मो कोटा दब आप कोड देते आप बिरियानी देवे हाँ बिरियानी देवी देवी 4 केजी बिरियानी देवी मैथ बैच पे मानस सर बैच इटा सब बढ़िया ना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज घर जी बस टेस्ट सीरीज दब माराथन संडे करिया संडे संध्या 7 9 हाँ SSB TGT बैच 15 फेब्रुआरी विद्या चली पे छोटिया थोड़ा देर मो तरफ फॉरगेट द मिस्टेक रिमेंबर द लेसन मिस्टेक को भूल जाओ ये जो जिनसा शिखी से मन रख ठीक अच्छे 16 नंबर क्वेश्चन हाँ सेल्फ असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग द आंसर आर असेसमेंट फॉर लर्निंग ही हम फॉर्मेटिव हो थैंक यू सो मच पे जोटा होमवर्क देती तार आंसर कमेंट सेक्शन में देवे और सेशन भल लगे खराब लगे कमेंट कर जनइबे थैंक यू सो मच फॉर इन द क्लास देखा पे काली नमस्कार एवरीडे